Very good evening to all of you. Is this audible? Visible to all? Am I audible? Visible everyone? All clear? All clear? Everyone joined? Okay. Yes, gradually students are joining. So let's start today's topic of discussion. Aji economics ro kiछि important topic ऊपर हमें discussion करिवा through MCQ. MCQ format रे discuss करिवा. यदि कहार किछि क्वेश्चन पचारिबार अछि ताहले पचारंतु. कृष्णा नमस्कार. ओके. सो काली रो क्वेश्चन समस्त प्रैक्टिस कले आउ थरे घरे जो जो क्वेश्चन आम गत काली क्लास रे प्रैक्टिस करथिले ताकू समस्त घरे आउ थरे प्रैक्टिस कले. ठीक अछि. तले आज रो क्वेश्चन को आसीबा. आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि मोस्टली पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट. एई टॉपिक ऊपर मु डिस्कशन करिवि. तापर कहली पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर हम आज डिस्कशन करिवा. ठीक अछि. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करिवि. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. छोट छोट क्वेश्चन पर जोथरे कॉन्सेप्ट थिबो. Is this clear? First question, what is the primary basis for determining poverty line in India? बुझी होची कि नहीं? कौन कहते आंसर इज बी. ये कौन कहूची प्राइमरी बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी डिटरमिनेशन केमिति करा जाए. मो कथा बुझेला कौन कहली पॉवर्टी डिटरमिनेशन केमिति करा जाए. मोस्ट इंपोर्टेंट होची कंजप्शन लेवल. दीटा जिनस हम पढ़थले गोटेला इनकम आ गोटेला एक्सपेंडिचर. कौन कहते गोटेला इनकम आ गोटेला एक्सपेंडिचर. सो इनकम वाइज हमें देखुतले नहीं कि इनकम वाइज हमें देखुतले तो कंजप्शन जनकर केते अछि. तो एई अनुसार हमें पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करूचे. दिस क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of poverty is measured in terms of inability to meet basic income requirement for survival? Which type of poverty is measured in terms of inability to meet basic minimum requirement for survival? Relative, absolute, seasonal, cyclical. Basic minimum requirement मिलेनी जेतेबेले ताको कोन कहउची that is called absolute poverty. कोन कहउची ताको that is called absolute poverty. बुझेला कि नहीं? What is absolute poverty? आउट थिला रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी कोन? व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी?
व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी कौन? एठी हम कंपैरिजन करूथिले, कंपैरिजन और कंपैरेटिव वैल्यूएटी देखुथिले, कौन कहा कहा कंपेयर करथिले? कंपैरिजन। नाउ टॉप 20% लेट्स से टू बॉटम 20%, कौन कहले? टॉप 20% टू बॉटम 20% कंपेयर करथिले, ताको कहले हम गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट? ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी टा को हम मेजर केमति करथिले? माने करो टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़, सेटू बिलो दी पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी अछन लेट्स से 42 करोड़, केते परसेंट हला ना? परसेंट इज 30%। परसेंट केते ना? परसेंट हला 30%। दिस इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। दिस परसेंट इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। दिस करेक्ट? गोटे को हेड काउंट रेशियो रे देखिले एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, रिलेटिव पॉवर्टी को हम देखिले गिनी कोएफिशिएंट रे। Relative poverty is measured in Gini coefficient and absolute poverty is measured केमती measure कले ना in head count ratio. Clear? Next question. In India, poverty is concentrated more in India poverty is concentrated more in समस्ते कहबे टिके question. Question होची poverty is concentrated more in where the concentration of poverty is more. Yes, Krishna. North India, North Indian states, urban, coastal, rural. ना rural poverty is more समस्ते जानी चल, हाँ कि नहीं? कुटी रूरल इंडिया रे रूरल पॉवर्टी रो वैल्यू और रूरल पॉवर्टी इज मोर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? व्हिच इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? के नॉट ए मेजर कॉज? क्वेश्चन देखो, not a major cause: unemployment, excessive consumption, low levels of education, high population growth. ये चारिटा फैक्टर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कौन की कहते अनएम्प्लॉयमेंट, की कहते एक्सेसिव कंजम्पशन? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉज. Now low levels of education is a cause, high population growth is a cause. जोटा कंजम्पशन बढ़िले कौन हम? हाई मोर दी कंजम्पशन मोर विल बी प्रोडक्शन, मोर द प्रोडक्शन मोर विल बी एम्प्लॉयमेंट, the more the employment less is poverty, more the employment less is poverty. मुझे लगी नहीं? So B is the correct answer. If the poverty gap measures, poverty gap कौन measure करूची? Spread of poverty across rural urban in India, difference between poverty line and actual income of all below the poverty line, average income of population, number of poor people in urban area. आज कुआडे गले समस्ते? where are others? अन्य माने कहंती आज? शुभस्मिता को Pranam Priti. So you joined late, Sasmita. You joined late.
कौन होइतिला मझिरे कुआड पळैथिले हां now I think everyone is present the class now the class looks full everyone joined कहीं लेट है आज जॉइन करने को वेरी गुड इवनिंग सस्मिता प्रीति ओके ये क्वेश्चन देखो आज पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रो डिस्कशन चली काली आम अनेक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करथिले सो क्वेश्चन होउची कि पॉवर्टी गैप मेजर्स कौन पॉवर्टी गैप आ भीतर कौन मेजर करे चारिटा भीतर की कहबे डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी एंड द एक्चुअल इनकम ऑफ ऑल एक्चुअल इनकम ऑफ ऑल this is the answer is B next disguised unemployment is most commonly found in which sector disguised unemployment को sector रे देखा जाए most commonly it is found in which sector most commonly it is found in which sector अरे आंसर अच्छी कि और ये भूल रही जाए ठीक अच्छे ठीक है तो इंटीग्रिटी टेस्ट करा ये क्वेश्चन माध्यम कि आंसर न देखि आंसर कहूँ है कि आंसर न देखि आंसर लुचे दूँ कि आंसर न देखि कहूँ देखियो जानी समस्त इजी क्वेश्चन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रे हमें कोन देखुतले मोटे या कहया को चाहूची ना मते कोन क्वेश्चन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रो वैल्यू केते इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोंदु व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट केते कृष्णा अस्मिता कुह प्रीति my lifestyle and fashion what is your exact name actual na kon tumara my lifestyle lekha है now the value of this marginal productivity is 0 here kon ko बेटी marginal productivity रो value केते ना it is 0 नहीं कहीं ना एक्स्ट्रा मन कर 10 टा लोक थिले 10 पीपल से माने गोटे काम को कंप्लीट करुथिले इन 15 डेज इन 15 डेज लोक बढ़ाई देला 20 पीपल ताले ये केतना डेर करिवे देखो बढ़ाई देला 20 पीपल ताले ये केते दिन करिवे मे बी इन 20 डेज सॉरी लोक बढ़ाई देला माने कम दिन करबा कथा केते 15 दिन कम डेफिनेटली लेस देन 15 डेज होबा कथा लेस देन 15 पर जदी ये सेही 15 दिन रे कले ताले जो एक्स्ट्रा 10 जन आसले तांकर फंक्शन कोन नो फंक्शन so here we can say it is 0 marginal productivity is 0 here लिखिक रखिए marginal productivity is 0 okay. which type of unemployment refers to people who are employed but not productively engaged due to overemployment कौन कह जाउछ ओवर एम्प्लॉयमेंट पाई and this question is based on the same concept that is disguised unemployment well this is for disguised unemployment and disguised unemployment हमें देखिले this is because of over population और ओवर एम्प्लॉयमेंट इन अ सेक्टर जेतिकी लोक दरकार एठी ताठू अधिक लोक जदि अछन मन कर हमको दरकार 20 लोक 50 लोक अछन कोन कहले 20 लोक दरकार 50 लोक अछन सी जगह हम कहू छे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट व्हिच पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गारंटीज वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया वेज एम्प्लॉयमेंट की रूरल इंडिया रे
ना यार आंसर समस्त जानते मुझे क्वेश्चन केतरा पचारि ना हाउ मेनी डेज ऑफ लीगल राइट टू वर्क हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क प्रीति 100 डेज वेरी गुड 100 डेज ना आउ कौन एटी मन रखा दरकार मनरेगा ऊपर आपको 100 डेज ऑफ वर्क आउ कौन मन रखा दरकार एटी ना आउ मन रखा दरकार इज इट अ लीगल राइट टू वर्क is it a legal right to work only rural or urban not 90 100 এটা কোন it is a legal right to work এটি কিছু সোশ্যাল অডিট हुए কি সোশ্যাল অডিট हुए কি নাই yes সোশ্যাল অডিট हुए yes লিখিবা এটি সোশ্যাল অডিট हुए ঠিক আছে not urban তাহলে বুঝিয়ে গলা মন নরেগা महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट clear next which program aims at providing nutritional support to poor children nutritional support to poor children co sector sorry which scheme on the largest scheme midday meal scheme now nutritional support plus is it related to which article of the Indian Constitution is it related to any fundamental right is it related to any fundamental right yes or no question is it related to any fundamental right yes which fundamental right it is related to fundamental right of duty तो अच्छी मतलब fundamental right कथा कौन yes it is related to right to education कोडी अच्छी रे right to education कोडी अच्छी को article under article (21A) now 21A এটা originally थिला constitution रे ना originally এটা थिला constitution रे ना এটা amendment ହେଲା ପରେ ଆସିଛି ଯଦି amendment ହେଲା ପରେ ଆସିଛି ତାହେଲେ which constitutional amendment act এটা important କୋଉ constitutional amendment act so ଏଠି answer ହେଲା କଣ ତମର mid day meal scheme या सहित गोटे फाउंडेशन no 42nd 86th constitutional amendment act 2002 yes अरुंधति करेक्ट प्रीति करेक्ट सस्मिता करेक्ट ताले मिड डे मील स्कीम इज रिलेटेड टू अ प्राइवेट एनजीओ आल्सो एनजीओ तो सबले प्राइवेट को एनजीओ now one NGO is always found in news current affair रे न्यूज रे गोटे एनजीओ रो नाम को बारंबार देखियो मिले रिलेटेड टू दिस मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम व्हाट इज नेम ऑफ दैट एनजीओ नो नो नॉट प्रथम कहि परिबो समस्त टिके भाबले कहि परिबो अक्षय पात्र फाउंडेशन नुहे अक्षय पात्र फाउंडेशन ये सीधा कौन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 नेक्स्ट
Which of the following is a direct employment program? Which is your direct employment program? Basic concepts कराउछि रिवाइज करिया पे. National Rural Livelihood Mission कहउछ. प्रीति. Yes, कल्पना A. NRLM बा National Rural Livelihood Mission. ठीक अछि ना. ये मेगा फूड पार्क स्कीम एटा कोन पई अछि? Why this scheme? Why mega food park scheme? मेगा फूड पार्क स्कीम कोन पई अछि? एटा एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करिया पई. ओ सेक्टर एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करिया पई अछि. बुझे ना. ओ सेक्टर कहले एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करिया पई अछि. मेक इन इंडिया तो जानि छ. जीएसटी टा कोन? जीएसटी इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी कोन? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. Now my next question is, GST constitutional tax? Is GST a constitutional tax? Is it mentioned in the Constitution of India? Is it mentioned in the Constitution of India? Yes or no? Yes, it is mentioned. Yes, it is mentioned. Article किए कहि परिबे? Next. Article कहि परिबे? 101 Constitutional Amendment Act rohit. Which article? 279A. Good. एगुडा का इंटरकनेक्शन मन रखियो. तो एमती नाही जे इकोनॉमिक्स रे पढुथिया पाठ केवल इकोनॉमिक्स रे आसीबो. पॉलिट रो पाठ केवल पॉलिट रे आसीबो. नाउ इंटरकनेक्टेड. नाउ मेंस पई जेतल पढे तो फुल इंटरकनेक्शन इज देयर. मेंस पई पढिला वाले कंप्लीट इंटरकनेक्शन अछि. प्रिलिम्स रे इंटरकनेक्शन कम. मेंस क्लास कला बेले फुल इंटरकनेक्शन आसीबो. So then what does Gini coefficient measure? What does this Gini coefficient measure? Gini coefficient कौन शो करूँ मैं ऑलरेडी कहि सारी. It shows income inequality. It shows income inequality. Is this correct? Churning poor refers to churning poor. This statement refers to. Okay, simple question. What is the meaning of churning poor? Aji only one सब कुआडे गले. Now share करंतु only one so that everyone can take benefit out of this class. Share with your friends. No idea.
people continuously below the poverty line, people moving in and out of poverty regularly, urban poor, rural poor. Now guess kale, guess करंतु कोडा कोडा एथुर कटि जीव मते कोन कथा एथुर guess करंतु कोडा कोडा एठी हमें eliminate करि परिबा. Now elimination method is very important to learn in case of prelims exam. elimination method टा बहुत important बुझिया दरकार की हेबे एठी. अर्बन पोर रूरल पोर कटि जीव फर्स्ट एलिमिनेट करि परिबे कि नहीं अर्बन पोर आ ए आ बी भीतर कोन आंसर people moving in and out of poverty regularly. Churning poor means कोन let's say this is the poverty line, people here and here एमदी ए भलिया जदि रोटेट करिवे ताले को churning poor बुझेला व्हाट इज churning poor. बस ठीक अछि सरला गेस कले ठीक है जाउछि गेस कले ठीक होछि कि नहीं. नाउ गेस वर्क स्मार्ट वर्क आ कोन करिया पड़ियो गेस वर्क स्मार्ट वर्क देन एलिमिनेशन मेथड. मनोरंजन अने माने सुनी करछथि मते क्लियरली इज दिस ऑडिबल टू ऑल क्लियर प्रीति ओके ठीक अछि. डिवाइस रो वॉल्यूम को इंक्रीज करि परिबे जहा को लो लागुछि. ओके तो चर्निंग पोर गला एलिमिनेशन मेथड एटा को हम करि पाले. नेक्स्ट मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक क्लाइमेट मींस मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक क्लाइमेट मींस ए क्वेश्चन बोधे मु काली करिथिली मोर जतिक मने अछि. Some financial choice taken by authorities different are left to market force. All financial determinations are taken based mostly on demand and provide forces. Now government has full handle. Government ro full handle not thai. Market term use hoichi. Economic judgment are taken after maintaining in view of social welfare. No. एटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रो कथा आसुछि ताले कोन हबो सम फाइनेंशियल चॉइस टेकन बाय some taken by authority rates are left to the market. But A जे देखलो A is more appropriate. A also देखलो relook into the A. All financial determinations are taken based on demand and supply force. So it कोन होजे demand supply कथा अछि then A. Demand supply अछि so A हैना यदि एटा नथांदा ताहले हम या ऊपर होई परिबा. Some decisions taken by government and some are by बुझेला कि नहीं some are by market and some are by the authorities. Next, planned economy based on India. A planned economy is based on which system? In India, planned economy is based on now in India there is capitalism as well as there is socialism. Hungry. In India there is capitalism as well as there is socialism. These are exist करुछ. So it कौन होता है mixed economy. हंगे mixed economy capitalism और socialism जो exist करे. तो mixed economy capitalism is led by private sector or government sector.
Socialism is led by government or private? Capitalism by private sector, socialism by government sector. Which one of the following economists proposed LPG model? Now, यार आंसर तो समझते जानी चाहिए, but my objective is to discuss some of the concepts in every question. Now LPG model, liberalization, privatization and globalization. ये केबे आसिला? When this model was introduced? This model was introduced in 1991. This model was introduced in 1991. What was the objective? Objective कौन थिला? Globalization, liberalization and privatization. मते कहतु ए समय प्राइम मिनिस्टर किए थिले? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, rate tapism. Rate tapism was reduced or increased? Increased or decreased after LPG model? LPG model आसिला पर rate tapism ता बढ़िला ना कमिला? मो क्वेश्चन बुझिला? LPG model आसिला पर rate tapism ता बढ़िला ना कमिला? Yes, very good. To dismantle the license raj and for market based economy. PV Narasimha Rao was the prime minister. Very good. Dr. Manmohan Singh was the finance minister. Clear that? Rate tapism reduced or decreased? Increased or decreased? खाली गोटे line को. Rate tapism increased or decreased? Reduced. चलिए यहाँ बदल रहे हैं रेड कारपेट. अब बदल रहे हैं रेड कारपेट. Economic planning को लिस्ट अच्छी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट इन एनी स्पेसिफाइड लिस्ट. नाउ लिस्ट टा एटा कहि तार आंसर. तापर मते कहबो लिस्ट को शेड्यूल रे अछि. इकोनॉमिक प्लानिंग अरुंधति ए. ओके, सेवन शेड्यूल इट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट मींस किए प्लानिंग किए सेंट्रल गवर्नमेंट करे ना स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन लिस्ट ऊपर only union government can formulate law or government of India can formulate law. State list ऊपर only state government. Now concurrent list ऊपर के ना both the union government and the state government. Both the union and the state government. Now এটা কোউ লিস্ট রে আছে কইলি? সরি কোউ শিডিউল রে আছে? 7 শিডিউল. Now planning টা আমি কোউটু আনিছে কোউ দেশরু? प्लानिंग मेथोडोलॉजी टाको हमें कोड कॉपी करछे कॉन्स्टिट्यूशन को. फ्रॉम व्हिच कंट्री? फ्रॉम व्हिच कंट्री? नो, नॉट ऑस्ट्रेलिया. कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया. प्लानिंग टा कोड आछि? वेरी गुड मनोरंजन, यूएसएसआर.
ये अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन देखो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन which of the following is not included in agriculture and allied agriculture of the Indian economy? Not included in primary sector. फूड प्रोसेसिंग टा ताले को सेक्टर रे आसुची फूड प्रोसेसिंग को सेक्टर रे आसुची सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग रे आसुची प्रोसेस ये जो मेगा पार्क ऊपर डिस्कशन करथुन ना वर्तमान दैट इज रिलेटेड टू योर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैला which sector is backbone of Indian economy which is the backbone of Indian economy दीटा उपाय देखि परिबा हमें क्वेश्चन को प्रथम डिपेंडिंग ऑन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी द्वितीय डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन कौन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी गोटे आ गोटे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट फैक्टर ये दीटा फैक्टर देख पारे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हेले किए हम सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट फैक्टर हेले हम एग्रीकल्चर सेक्टर बट ए क्वेश्चन एक्जाक्ट आंसर कौन ये दीटा सेक्टर अधिक दौरान बट आंसर होची यार एक्जाक्ट आंसर होची क्वेश्चन सर्विस सेक्टर कहीं व्हाई सर्विस सेक्टर बिकॉज yes 1A 2D because contribution to GDP is maximum. Next. Then green revolution in India contributed to inter-regional inequality, inter-class, inter-crop inequality. Now ये inequality केमती क्रिएट कला ना ग्रीन रिवोल्यूशन को रीजन नहीं थिला ग्रीन रिवोल्यूशन कौन पाई हेतिला प्रोडक्टिविटी बढ़िया पाई कहार को प्रोडक्ट रो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्ट रो व्हीट एंड राइस एटा कोडी सक्सेसफुल हेतिला इट वाज सक्सेसफुल इन यूपी वेस्टर्न यूपी पंजाब एंड हरियाणा ये तीन जगह सो ए रीजन ने सक्सेसफुल है रेस्ट ऑफ द रीजन है सो इट लेड टू इंटर रीजनल इनइक्वालिटी इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी केवल ये व्हीट और राइस को देखिला सो इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी क्रिएट कला सो इट वाज हेल्पफुल फॉर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओनली इट वाज हेल्पफुल फॉर रिच फार्मर्स ओनली so ये क्रिएट कला का ना इंटर क्लास इनइक्वालिटी चलो व्हाट इज द आंसर आंसर इज डी all type of inequalities they are created by green revolution बुझी होची ना नहीं next the importance of agriculture in Indian economy is indicated by its contribution to which of the following so simply question कहूची yes government option all last question now this question agriculture in Indian economy is indicated by
दिस इज फॉर बेनिफिट हमको कौन मिलू ये व्हाट आर द बेनिफिट्स नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूची यस मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड यस एग्रो प्रोसेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यूटीओ रिसाइम रे एक्सपोर्ट करूचे हमें एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन कहले एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स ये कौन करछि फूड सिक्योरिटी एंश्योर करछि इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी सो आंसर कौन हो ऑल ऑफ दिस कौन आंसर है ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड नो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें देखले राइस विथ रिलेटेड प्रोडक्शन बढ़ाउछ ब्लू रिवॉल्यूशन टा कौन करछ रिलेटेड टू not oil seed no blue revolution is fish production food grain production टा कौन एला ब्लू रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन टा देखिले हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन टा और मिल्क प्रोडक्शन ऑयल सीड प्रोडक्शन टा कौन कह जाए दिस इज नोन एज oil seed is called yellow very good milk is called white revolution which of the following has not been a component of agricultural strategy that brought about green revolution की has not been component of agricultural strategy no idea okay मु बुझे दूची नो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मिलुथिला कोन मत को कौन यूज करियो कहला ये प्रथम हला इरिगेशन हां कि नहीं देन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एचवाईवी सीड्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ कौन देला फर्टिलाइजर एगुडा सब कौन दीज आर इनपुट्स पैकेज इनपुट पैकेज कहा को फार्मर मानक मिलला दिस पैकेज ऑफ इनपुट्स हैला सो आर ऑब्जेक्टिव रहिला कोन टेक्नोलॉजी भी यूज करिवो न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्रॉपिंग इंटेंसिटी टा को भी इंक्रीज करिवो हां कि नहीं क्रॉपिंग इंटेंसिटी टा को भी इंक्रीज करिवो नाउ इज देयर एनी एश्योरेंस फॉर मैक्सिमम प्राइस is there any assurance for maximum price or minimum price by assurance there is assurance for minimum price MSP not maximum price here
ठीक अच्छे which of the following statement is incorrect about infrastructure incorrect मागी देख एटा देखियो मन दे ए भलिया रे भूल हुए बहुत क्वेश्चन मागी इनकरेक्ट करेक्ट मार दे के क्वेश्चन देख समस्त देखंतु क्वेश्चन कौन हम incorrect infrastructure is an important contributor to economic development yes all infrastructure facilities directly impact production of goods and services infrastructure is required to provide support service ठीक अच्छी एटा डायरेक्ट ठीक एटा भी ठीक all infrastructure facility directly impact production of goods and services yes अच्छा डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कौन हम एटा all infrastructure facility not directly this is indirectly तर पानी बिजुली रास्ता घाट ये कौन डायरेक्टली so B is the correct answer B which of the following statement is not function of primary healthcare yes B final yes they provide essential drugs they are involved in spreading education awareness related to health problem they involve in research the proper nutrition related yes or no yes they involve in promoting nutrition don't they promote only don't they promote yes they promote well yes they promote ତାହେଲେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କି ଏମାନେ କିଛି are they involved in research no they don't involve in research no they don't involve in research clear correct next which of the following statement is true power from water is thermal power from water is atomic power from water is tidal power from water is hydroelectric no किछि नहीं ये क्वेश्चन समस्त ठीक करिए no economics रे बहुत इजी क्वेश्चन आसुची बेसिक क्वेश्चन आसुची इकोनॉमिक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट आसुची
इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन डिफिकल्ट आसुची कि नो दे आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कौन कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते which of the following is true about social infrastructure which is true about social infrastructure housing is essential component internet is essential component roads electricity essential component ki asibo infrastructure social infrastructure no roads and highways they are not social rather they are physical infrastructure nui they are physical infrastructure na re kya bote kon achi housing doesn't come under electricity roads internet housing now electricity is social infrastructure no doubt internet is also social infrastructure roads highways और housing now housing टा कौन हबो डी ହେଲା फाइनल ओके housing रे कौन housing is all about a minimum requirement it is not a social infrastructure rather it is a minimum requirement food shelter and cloth बुझेला which of the following statement describes state of infrastructure in low income country हाँ ठीक देइथिला करेक्ट करेक्ट ठीक देइथिला करेक्ट which of the following statement describes state of infrastructure in low income country low income countries generally don't invest in building transport service building irrigation building power building telecommunication don't invest in कोथरे transport irrigation power telecom telecommunication higher order रे आसीबो so not required हैला next Baba Kalyani committee is related to revamp of which one SEZ industrial corridor civil aviation shipping Baba Kalyani committee SEZ टा कौन था स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं it is all about special economic zone question এটা ছোট হয়ে যাইতিলা লাস্টটা now this is the
देखो बड़ हो गला एबे विजिबल व्हिच स्टेट हैज द फास्ट एसईजेड इन इंडिया नाउ अरुंधति विजिबल नाउ नेटवर्क जदि स्लो थिबो ताल टिके कम विजिबल हबो बट विजिबिलिटी इज गुड मो पाखे गोटे मोबाइल व्यू गोटे डेस्कटॉप व्यू गोटे टीवी व्यू सब अच्छी सब विजिबल अच्छी सबुठु अधिक एसईजेड कोठी हाँ वन शॉट वीडियो अच्छी ना इकोनॉमिक्स वन शॉट वीडियो अवेलेबल अच्छी इकोनॉमिक्स देखि परिबे समस्ते प्लेलिस्ट को जीवे प्लेलिस्ट रे देखियो वन शॉट 8-9 आवर रो क्लास अच्छी पूरा इकोनॉमिक्स कवर होइछ बुझेला कृष्णा 1965 highest number of SEZ को स्टेट लास्ट क्वेश्चन highest number of SEZ in which state highest number of SEZs in which state तमिलनाडु ठीक अच्छे सो क्लास बुझीला खाली पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट नुहे या सहित आहरी अनेक गुडे इंपोर्टेंट कांसेप्ट भी आज क्लास रे हम डिस्कस कले नाउ क्लियर एनी डाउट पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आहरी इंपोर्टेंट इश्यूज गुडा को हम डिस्कस कले इन द सेम वे हमर आउ क्लास रहइबो आसंता काली मध्य क्लास अछि ठीक अछि ये वीक रे काली गोटे क्लास रहइबो पर दिन में गोटे क्लास रहइबो तो समस्त अटेंड करेंगे इकोनॉमिक्स रा आउ कुछ इंपोर्टेंट कांसेप्ट हम एमती डिस्कशन करिया ऑलराइट एनी क्वेश्चन चलो ठीक अच्छे डेली क्लास होची 9 रु 10 इवनिंग 9 टू 10 एई वीक रे क्लास अच्छी गत काली हेतिला आज भी हेची काली बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करथिली पुनी आसना काली भी डिस्कशन करबा आज पई एतिके आउ जहा रहला नेक्स्ट क्लास थैंक यू गुड नाइट